Assalamu alaikum, and we are back with another book review by Elif Shafak, namely 40 Rules of Love, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली book review में बताया था. अब this book review is situated as a novel within a novel. हम बुक के अंदर ही हम एक और नॉवल के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको इस बुक रिव्यू में बताऊंगी. अब इस स्टोरी की लाइन जो है, इसमें यह है कि दो पैरेलल स्टोरीज इकट्ठे चल रही हैं. स्टोरीज में कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, एंड ऑल्सो इट इज डिफरेंट विद 7 centuries टाइम डिफरेंस. एक 7 सेंचुरी पहले की और एक अभी की स्टोरी चल रही है. अब स्टोरी स्टार्ट होती है विद एला रूबिनस्टाइन के एक शी इज अ हाउसवाइफ, जिस who is having an unhappy married life with an unfaithful husband, and she does not find any sort of enjoyment or excitement in her life that she is having at the moment, and she feels as if life is just dull and confined to that small home of hers, जिसमें उसके she has 3 kids and that one husband, and उसकी life उसके around revolve करती है. But all of that actually changes when she gets a job as a writer in a reading state for a private company. uh, उसको सबसे पहले उसका टास्क मिलता है कि उसने एक नॉवल के बारे में आगे लिखना है, उसके बारे में उसने जर्नल लिखनी है. नॉवल का नाम जो है दैट इज द स्वीट ब्लास्फेमी, एंड इट इज़ बाय एन अननोन ऑथर, जिसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं था उस टाइम पे, एंड ही वाज लाइक अ न्यू राइटर जिसने पहली पहली दफ़ा एक बुक लिखी थी. तो उसके बारे में एला ने एक यू कैन से राइटिंग पीस लिखनी थी, जिसके जो उसने पब्लिश करनी थी. अब द ऑथर ऑफ दैट स्टोरी वाज अजीज जहरा, एंड ही रोट दैट नॉवल अबाउट जो है आपके 13th century पोइट रूमी, एंड जो उनके बिलवेड टीचर थे शम्स तब्रेज़, उसके बारे में ये स्टोरी है. बेसिकली शम्स एक यू कैन से एम्बिशियस स्कॉलर था, इन एक टीचर था, एंड हिज सोल पर्पस वाज टू फाइंड समवन दैट डिवोटेड टू हिम, जिसको वो टीच कर सके, अपनी विजडम एंड अपनी नॉलेज उसको दे सके. And in that sense he found Rumi as his student. रूमी को यू कैन से एक वॉइस ऑफ लव के तौर पे एक पोइट उसको बनाना चाहता था. शम्स यूज्ड टू से दैट रूमी हैज अ लॉट ऑफ potential to be the greatest poet of all time, which as we know now he is, and अभी तक उसकी poets and उसकी जो writings है वो हर जगह पे पढ़ी जाती है, उसके बारे में लिखी जाती है, उसके बारे में लिखा जाता है. शम्स का ये गोल बन गया था कि उसने रूमी को उसके मकाम तक पहुंचाना है, उसने रूमी को एक ऐसा मकाम देना है जो कि पूरी दुनिया देखेगी. लेकिन रूमी की कम्युनिटी एंड उसके जो फैमिली थी उनको पसंद नहीं था. उनको शम्स बेसिकली उनको अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज ही थॉट दैट ही वाज अ रिलीजियस प्रेजुडिस, and he was deviating from the social norms of the society, and that he was doing something wrong, although he was doing nothing but teach Rumi about his teachings and his life, and the way he dealt with them, and how he conquered all of them. अब इन दिस स्टोरी वी कैन से जिस तरह के रूमी और शम्स के दरमियान जिस तरह का रिलेशन हुआ था, उसी तरह से एला एंड अजीज़ के दरमियान भी रिलेशन स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द exchanging emails between Ella and Aziz. They started to develop a sort of bond between each other, and they started to have feelings for each other. एला को कन्फ्यूजन थी कि उसकी ऑलरेडी एक सेटल्ड लाइफ चल रही है, एंड शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ हर ओन लाइफ नाउ, and Aziz is probably having his own life now, but both of them are in a pathway where they're going to be astray from that. They don't want that peaceful life, they don't want that you can say stable life, and it was a risky step for both of them. And Ella and Rumi की स्टोरी एक जैसी है in the same way, and जो Aziz and Shams है उसकी भी स्टोरी एक जैसे है, because Aziz is there to help Ella get away from the simpleness of life, and the same way Shams wants Rumi to get another taste of life other than all of this life in rules and restrictions, you can say put down by his family and his community, जो कि रूमी को बचपन से फॉलो करनी पड़ी.
अब आगे हम इसके बारे में ये हमें पता चलता है कि इसी जर्नी में शम्स ने 40 रूल्स ऑफ लव जो है आगे रूमी को पोर्ट्रे किए, जिसके साथ एला बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट हुई जब उसने वो बुक पढ़ी, उसने वो बुक को देखा, एंड शी वेंट टू द डेप्थ ऑफ दोज रूल्स एक एक करके। अब इसमें से कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो which are, you can say, relates to not just worldly love but also that love that is of our creator। हमारे क्रिएटर के साथ जिस तरह का हमारा लव है, जिस तरह की हमारी उसके साथ बॉन्ड है, अटैचमेंट है, इट दोज रूल्स आर मेनली एक्सप्लेन अपॉन दैट, एंड दैट इज द, यू कैन से, व्हाई आर दे कॉल्ड रूल्स, बिकॉज दोज आर द रूल्स मेड बाय इट, कि ये होगा तो फिर ही हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हमें जो है अपने क्रिएटर से एक ताल्लुक है हमारा। शम्स बहुत डीपली इन रूल्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है रूमी को। एंड द सेम वे, अब इसमें Ella and Rumi both are a bit confused and a bit distraught in a way. You can say confused because they don't know what will be the future that they hold. Aziz and Shams do not promise a happy life to them, and they cannot promise that at all. They just know that they will help them in any sort of the way that they can. They will help them in attaining anything that they want to the best of their potential, to the best of their abilities. Now, we see that Ella continues with that path, same as Rumi does. They both trust their people in their lives to go into a new era, a new path, a new set, but they are blindly following that path because they want to. It is their own choice, and in this world, it is basically your own choice. You cannot change your own choices for someone else just by the meaning of that, but it is in the end it is your own doing that you followed that path, and the result of those are also your doing and your bidding. अब आगे के जो रूल्स है वो काफ़ी डिटेल में है, तो आई वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स फर्दर मोर। वो आगे जाके हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगी ये बुक रिव्यू, तो हम उसमें देंगे एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर क्वाइट इन डिटेल। एला के जो सॉरी जो ऑथर है एलिफ शफक, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। शी इज़ एन renowned female writer which has a lot of writings, you can say, um, the Bastard of Istanbul is her most famous book, other than this 40 Rules of Love, and also her she also has written a memoir, and उसकी writings जो है वो more than 30 languages में translate की गई है, and she is a very renowned writer both in languages of Turkey, in Turkish as well as in English, and she is right now situated in Turkey, and she continues to write books like that captivates the reader. बुक की बहुत ज़्यादा डिटेल है, एंड विच मतलब रीडर को और ज़्यादा इन डेप्थ होती है। इट्स नॉट अबाउट अ थिंग कि बहुत ज़्यादा डिटेल है तो आप उस बुक से थोड़ा दूर हट जाओ, नो इट्स नॉट दैट द वे। द मोर यू गेट इनटू द बुक, द मोर यू वांट टू डाइव इनटू इट एंड रीड इट मोर। तो यहाँ पे इस बुक रिव्यू का जो है अख्ताम करते हैं हम, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर बुक same as this way, and we would like you to, if you have any questions about the book review, feel free to ask in the comment section, and also give us suggestions on what more books we should write book reviews upon. The next book review we will be recording is about another writer, that will be Nicola Yoon, and that will be we will actually reveal that in the next book review, not in this one. So stay tuned for the surprise. Thank you, and Allah Hafiz.